Good morning, everyone. Uh, First of all, welcome Akshay, in your last semester, semester number 4, MCOM part 2. Um, we will learn new subject IFRS. Okay, so let's start chapter number first. Conceptual foundation of financial statement. So we all know what is meant by financial statement. We were learned many times, right? So financial statement like a balance sheet, and balance sheet showing financial position of company at a particular date of time. वर्षाच्या शेवटी फिनान्शियल पोझिशन काय आहे हे दाखवण्याचं काम काय करते तर फिनान्शियल स्टेटमेंट करत असते. त्याला आपण काय म्हणतोय तर बॅलन्स शीट असं म्हणतोय. सो आता जे आपल्याला गोष्टी लर्न करायच्या आहेत त्याच्यामध्ये मग फाउंडेशन काय आहे, कन्सेप्च्युअल फाउंडेशन. फक्त आपल्याला एवढं एकच सेंटेन्स माहित होतं की फिनान्शियल पोझिशन इंडिकेट बाय बॅलन्स शीट वगैरे आणि फिनान्शियल रिझल्ट इंडिकेट बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, राईट. सो त्याच्या पुढे जाऊन थोड्याशा डिटेल कॉन्सेप्ट आपण ह्या सब्जेक्टमध्ये बघणार आहोत आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही रूल्स रेग्युलेशन जे काही आहेत किंवा कोणते लॉ आपण अप्लाय करतो, कोणते नॅशनल आहेत, इंटरनॅशनल आहेत. सो मॅक्सिमम इंटरनॅशनल आपण काय करणार आहोत तर लर्न करणार आहोत कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट बघा, इंट्रोडक्शन टू फिनान्शियल रिपोर्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, introduction to financial reporting. Over the last few decades, global business has undergone a drastic change in doing business. Economic environment also changed drastically. जसं आपल्याला माहिती आहे की ट्रॅडिशनल डेजमध्ये फायनल अकाउंट लिहिण्याच्या पद्धती वेगळ्या होत्या किंवा फिनान्शियल अकाउंट थोडंसं लिमिटेड काय होता, त्याचा स्कोप लिमिटेड होता. बट मॉडर्न इरामध्ये काय झालेलं आहे तर त्याचा स्कोप सुद्धा ड्रास्टिकली चेंज झालेला आहे बिकॉज ऑफ इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. कारण इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर काय करतात तर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिझनेसवरती इम्पॅक्ट करत असतात, राईट. दॅट इज वाय हिअर सेड इट इज डिरेक्टली इन्फ्लुअन्स और ड्रास्टिकली चेंज इकॉनॉमिक फॅक्टर ऑन अ बिझनेस. So Indian being one of the emerging economic powerhouse and largest market in the world has been a part of the process change. आणि त्यामुळे काय झालेले आहे तर ऑर्गनायझेशनची प्रोसेस चेंज होताना आपल्याला बघायला मिळते. In today's world, these changes have registered a paradigm shift in the conduct of the business. आणि वेगवेगळे काय आहेत तर मेथड्स आहेत, तर आपण काय करतो त्या पद्धतीने आपला बिझनेस शिफ्ट करतो आणि बिझनेस रेकॉर्ड करत असतो. बिझनेस प्रॅक्टिस हॅज अंडरगोन ट्रिमेंडियस चेंजेस. आणि आता सुद्धा आपल्याला बिझनेसमध्ये ट्रिमेंडियस बरेचसे चेंजेस झालेले बघायला मिळतात. सो दिस हॅज जनरेटेड अ नीड ऑफ कंटिन्युअस इंटिग्रेशन global best practice in the business. That means here we focus on best practice in the business. So हम क्या करेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए जो बेस्ट वही हम क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे, फोकस करेंगे. In this view, financial reporting has resulted in map transformation. So financial reporting क्या करता है? So financial reporting has resulted in the map transportation. This has reflected in the transformation in financial reporting and setting up according to standards. That means when we follow a specific standard, for example, accounting standard, first accounting standard, बहुत सारे standard. So FISY में हमने learn किए थे like 32 37 accounting standard learn किए थे, right? क्योंकि फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग कंपनी के लिए था, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए था. दैट मीन्स व्हेन वी फॉलो द स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, so we understood it is the exact quality of the books of account. Here we apply a specific rules, regulation, guidance for a particular books of account. Okay, so इसलिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, फॉलो करते हैं स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए. So in India, the ICAI in the premier national institution in the country in accordance profession, it has played a leading role in the process of transformation. So हमको पता है कि सब जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसी है, देन गाइडेंस है, डिसाइडेड बाय ICAI, okay, Indian Institution of Chartered Accountant, okay, right. So according to ICAI has established accounting standard board.
According to ICAI has established Accounting Standard Board, in short ASB, in the year 1977. So 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म किए हैं किसने? AIC, that means Institution of Chartered Accounting India. The ICAI has undertaken significant initiative in setting up issue in accounting standard. So this is ensure that the standard setting procedure is full consultative and transparent. जो भी अकाउंटिंग व्हेन वी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंसी क्लियर करेंगे हमारे कि हमने कौन से रूल्स अप्लाई किए हैं, कौन से रेगुलेशन अप्लाई किए हैं, कौन से गाइडलाइन हमने अप्लाई किए हैं फॉर अ पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट. दैट इज वाई ट्रांसपेरेंसी हमें ज्यादा देखने को मिलती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट? So the ASB consider the international accounting standard, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दैट मीन्स IFRS, जो हमारे सब्जेक्ट का नेम है. हाँ, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. So while framing Indian accounting standard, so the idea is integrated in the light of application, law, custom, usage, and business environment in the country. So in short, here we follow a specific rules of accounting standard regarding international as well as our Indian both. Okay, those are suitable for our organization. These are the introductory part. Is it clear? इंट्रोडक्शन में क्या कहा है? जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसने फ्रेम किए हैं? हाँ, और हाँ, जो 1977 में है. और यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी के लिए, कॉन्फिडेंशियल के लिए और थोड़ा क्वालिटी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं इन अ पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट. क्लियर? पॉइंट नंबर 2, reporting as per the company law. So it's like a hierarchy. किस तरह से हम रिपोर्ट फॉलो करेंगे? सो फर्स्ट, कारपोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासिफाइड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, statement of change in equity and notes. Okay, then balance sheet includes statement of financial position and short term and long term position. So basically, we know short-term financial position indicate by current account, liquidity account, or liquidity ratio, current ratio. We were already learned in many time in ratio analysis. I think financial accounting में हमने learn किया है, right? Then profit and loss account क्या इंडिकेट करता है? सो हमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की क्या है वो इंडिकेट करेगा. देन एज वेल एज फिनेंशियल रिपोर्ट क्या है, फिनेंशियल रिजल्ट क्या है वो इंडिकेट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस. सो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट इंडिकेट बाय फिनेंशियल पोजीशन and profit and loss indicate financial result. These are the main difference between balance sheet and profit and loss account. Clear? Then cash flow statement define. So statement of the sources of application of cash. That means cash inflow and cash outflow. किस रिसोर्सेस में ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता है और किस रिसोर्सेस के वजह से कैश जाता है. तो इसका जो बैलेंस है, इसका जो स्टेटमेंट है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं. सो बेसिकली दीज आर क्लासिफाइड 3 कैटेगरी, ऑपरेशनल, फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल समथिंग, जो हम नेक्स्ट यूनिट में डिटेल पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट. देन एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश. ओके, सो दीज आर पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. देन इक्विटी में सिर्फ इक्विटी आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, देन प्रेफरेंस शेयर वगैरह वगैरह जो डिटेल है सब इक्विटी में इंक्लूड हो जाएगा. नोट्स में हो गए अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्सप्लेनेशन एंड अजम्पशन. ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्सप्लेनेशन एंड अजम्पशन एंड इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट. इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द फिनेंशियल, integral part of the financial statement. So these are the hierarchy or these are the corporate financial reporting. Is it clear?
बैलेंस शीट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, कैश फ्लो में क्या आता है, स्टेटमेंट में एंड नोट्स। ओके, सो पढ़ेंगे अब हम डिटेल वन बाय वन। बैलेंस शीट, so this statement represent the financial position which disclose a short term and long term solvency position. So we were learning ratio analysis. Short term position, short term solvency position indicate by current ratio and liquidity ratio. Okay, short term solvency position indicate by current ratio and liquidity ratio, and long term solvency position indicate by proprietary ratio, capital gearing ratio, debt equity ratio. So these are the balance sheet ratio. Okay, total उसमें 6 रेशो है, जो सम रेशो इंडिकेट शॉर्ट टर्म पोजीशन एंड सम रेशो इंडिकेट लॉन्ग टर्म पोजीशन. सो शॉर्ट टर्म में बेसिकली दो ही आते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो. क्विक रेशो को ही हम लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो बोलते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में प्रोप्राइटरी रेशो आता है, देन लॉन्ग टर्म में डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो आता है. ओके, देन स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो आता है. 4 रेशियो इंक्लूडेड इन द लॉन्ग. क्लियर? देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, it represent income and expenses and net financial results. So we were already learned many times, right? Profit and loss indicate क्या क्या करता है. So income वहां पे होते हैं, जो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में, राइट, एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड. सो हमको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेगा, एक फिनेंशियल रिजल्ट इंडिकेट करने का काम करेगा. ओके, देन थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इट शो सोर्सेज फ्रॉम वेयर कैश हैज बीन रिसीव्ड and use which show the application of the cash flow. तो हम कैश का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं और कैश का एक्चुअल रिसोर्सेस क्या है, जिसकी बताया, लाइक इनफ्लो एंड आउट, एज सिंपल एज कैश इनफ्लो. इनफ्लो मीन्स कैश कौन से वजह से आ रहा है, तो इसको इनफ्लो बोलेंगे, और जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, आउट. सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो. Point number 4, statement of change in equity. So it shows movement of equity and includes profit and reserve and surplus. Okay, so statement of change in equity, यहाँ पे हम मूवमेंट स्पेसिफिक क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि इक्विटी की मूवमेंट क्या होती है. सो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आएगा. एंड लास्ट नोट में आएंगे, इट शो द अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्सप्लेनेशन, assumption which from the part of accounts. So it help the interpret of financial performance. Is it clear? First question. So next question, meaning. In short देखेंगे अभी मीनिंग क्या है एंड डेफिनेशन क्या है, financial reporting accounting standard. So in any industry where it is manufacturing or services, there are various departments which function for achieving the corporate goals. So जो भी टाइप्स ऑफ कंपनी होगी उसका एक स्पेसिफिक गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे. So the functioning may or may not be interdependent, but at the end of the day they are linked in the account and financial department. So end में हम क्या करेंगे, financial accounting prepare करेंगे. Those are depends on various department and various activity, right? Because अभी पूरे साल में हर एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअली फंक्शनिंग करेगा, लेकिन लास्ट में हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल रिपोर्टिंग में इम्पैक्ट करेगा, राइट? So the accounting and financial aspect of each department are recorded and reported in the various stakeholders, because this report is useful for the various stakeholders. So आपको याद है stakeholders कौन से होते हैं? Right. Employees, creditors, consumer, investor, these are the stakeholders. Okay, so financial reporting is useful for the various stakeholders, right? So there are 2 types of the reporting: financial reporting to various stakeholders first, and second,
management reporting for the internal management. Okay, so here we prepare two types of reporting. Those report useful for the stakeholder and one report useful for the management or internal management, because we cannot show all information to the stakeholder. That's why. Okay, so both the reporting are equally important, but financial reporting is very important. It has a vital part of the corporate governance. Is it clear, meaning? Okay. So it is standard definition of financial reporting. So financial reporting involve the disclosure of financial information to various stakeholders about the financial performance of the organization over the specific period of time. ओके, यहाँ पे हम ईयर एंड में सब फिनेंशियल रिपोर्टिंग क्या करते हैं, शोज करते हैं स्टेक होल्डर के लिए. दिस स्टेक होल्डर इंक्लूड्स अगेन इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, पब्लिक लेंडर्स, गवर्नमेंट एजेंसी और भी है जो यहाँ पे ऐड नहीं है, लेकिन आपको पता है क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज है, शेयर होल्डर्स है, कस्टमर है, इन्वेस्टर है. दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. So these stakeholder listed companies, listed companies, the frequency of financial reporting is quarterly and annual. So financial reporting is usually considered as the end product of the account. So हमको पता है कि reporting is like a aim. Okay. So financial reporting involve disclosure of financial information to the management and the public about how the company is performing over the specific period of time. सो कंपनी में जो भी साल में जो भी परफॉर्मेंस दिया है वो सब फिनेंशियल रिपोर्ट में शो करना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड द फिनेंशियल रिपोर्टिंग. दैट्स व्हाई हियर सेड एज सिंपल एज दैट financial reporting is useful to the stakeholder as well as company, and here we prepare financial report at the end of a year. Okay, is it clear introductory part and definition? Okay, so it is all about today. Thank you.